Welcome, guys. Welcome to Coffee with Friends, another episode which I'm going to be doing with Stanley, my lovely friend who is next to me right now. And today, I've been thinking about this episode for quite some time. मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैंने बोला भाई क्यों इतने लोग ये सब चीज़ गूगल में सर्च कर रहे. Okay, so we have decided that we will be answering the 10 most asked questions or search questions on Google. Okay, and we would be covering that. So, सबसे पहली बात तो I think we recently got an option to do an Instagram live. So Stanley, can you go on Instagram and find out if we are actually live on Instagram? I think YouTube में तो हम live है ही. I think we are live on YouTube for sure. So let's see Instagram. Do you see anything happening on Instagram? This is your account, right? Yeah. So apparently, भाई सबने ditch किया लग रहा है. I don't see this happening on Instagram. Hey, yeah, go live. Okay, so it is happening. Yeah, it is happening. Yes, this is Instagram live. This is Instagram? Yes. So, anyways. So चलो ठीक है अभी let's actually get into this, okay? So answer. Yeah, I got it. Okay, it is live, right? Hey. Oh, watching people live. Okay, so this is how it looks on live, just in case. Echo हो रहा है. Echo. So anyways, so चलो ठीक है Stanley, let's actually get into our today's topic. बंद करना है क्या कर रहे हैं? अरे बंद कर. अच्छा भेज रहा है किसी को? नहीं भेज दे. चल, okay, cool. Okay. So ठीक है. So, let's actually get into today's topic. So, we would be answering some of the questions. Okay, आज का पहला question है. Okay, so here is the thing, okay? तो क्या है? What is this thing? So, Google, apparently, people tend to ask a lot of questions and they want Google to respond to it. And there are common questions. मतलब ऐसे बहुत सारे questions हैं जो लोग continuously search करते हैं. So, what I have done, मैंने क्या किया है, I have handpicked, मैंने थोड़े questions को मैंने handpick किया है and me and Stanley are going to be answering those questions. So let's actually make this simple and easy for you folks. So let's go ahead, Stanley, okay? तो पहला question है जो हमने online search किया था, sorry, Google Trends के हिसाब से. The first question is what to watch. So ये वो सब लोग हैं जिसको पता नहीं, they are clueless, जिसको मालूम नहीं है क्या करना है. तो they are like asking, like they're wondering like what to watch. So you say what is that you want people to watch? मैं तो वही बोलूँगा, whenever we have a free time, okay, I'm exhausted or maybe I'm tired, after that मैं क्या बोलूँगा कि भाई कुछ वीडियोस देख लो, कुछ अच्छा वीडियोस देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो. बहुत लोग हैं जो नेचर में व्लॉग्स बनाते, ठीक है, दे ट्रैवल, तो ट्रैवल व्लॉग्स देख लो. एंड समथिंग यूज़फुल लाइक कुछ चीज़ सीखना है, शेयर मार्केट, कुछ वीडियोस, मतलब विच इज़ यूज़फुल, प्रोडक्टिव, जो आपको प्रोडक्टिव रखेगा, जो सीखने के लिए मिलेगा आप लोग को वीडियोस, तो वो टाइप के वीडियोस देख सकते हैं. सो व्हाट टू वॉच में वो सब वीडियोस हम देख सकते हैं विच विल बी प्रोडक्टिव फॉर अस. Absolutely. मेरा तो सजेशन एकदम उल्टा है. I तो would encourage people to waste time. So अगर आप ऑनलाइन हो और तुम्हें पता नहीं क्या देखना है, तो it's okay. Watch anything you feel it's gonna kill time. Okay. Now मैंने नोटिस किया है Stanley, I don't know if you agree with me, mostly कुछ watch करने का कभी मन करता है. Let's say that we have prepped your food. Or you're sitting with your girl, maybe your wife or girlfriend, whatever, and you want to chill. Correct. Right? Relax. अभी होता क्या है, by the time इतने options, इतना content create किया है Netflix and other platforms, भाई consume करना is next to impossible. तो मैं क्या suggest करता हूँ इन लोगों के लिए, what you guys should do is just watch trailers. Movie trailers जितने भी है, या तो series के जो trailers है, खाली वो देखो. Watch as much as you can and move on, go to sleep. It's okay, क्योंकि by the time आप decide करो कि क्या देखूँ, खाना तो खत्म हो जाएगा. इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. मैं यूजुअली मैं और वाइफ जब भी बैठ के हम लोग खाना खाने के लिए रेडी होते हैं, हम लोग टेबल में खाना वाना आ गया, तो मेरे हाथ में रिमोट रहता है.
Okay. तो मैं ढूंढता हूँ कुछ देखने के लिए, तो वाइफ वहाँ से आवाज़ करती है, अरे कुछ अच्छा लगा दो खाने से पहले। तो मैं खाना चालू रहता है, मैं जस्ट ब्राउज ही कर रहा हूँ। मैं देखूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यूट्यूब में व्लॉग्स देखूँ या फिर कोई OTT ऐप्स में चले जाओ, मूवीज़ देखूँ, क्या देखूँ, उतने में देखते ब्राउज करते करते खाना ख़त्म हो जाता है। Absolutely, यार, absolutely. Another thing मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर ठीक है ना, if we ask for recommendation, what would you recommend? तो I remember कुछ महीने पहले I watched this movie. It's like a horrific horror movie. Okay, the typical जो horror movie वैसा नहीं है. The name of the movie is called The Medium. MEDIUM 2021 में रिलीज हुआ था. इतना फैन फॉलोइंग नहीं है ये मूवी में. There's not too many IMDb ratings also, but it is a crazy horror film. Okay, अगर आपको इंग्लिश में सबटाइटल मिल गया तो nothing like it. What I'm gonna do is ये जो मूवी है थोड़े टाइम के आफ्टर पोस्टिंग दिस वीडियो फॉर मे बी आफ्टर एन आवर और 2, उसके बाद मैं इसका लिंक्स शो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू वॉच इट. ऐसा तूने कोई मूवी रिसेंटली देखा नहीं विच यू आर लाइक अ फैन ऑफ, यू वांट टू रेकमेंड टू पीपल? मूवी मैंने एक देखा था, बट उसका बहुत अच्छा रिव्यू है IMDb में, शॉशैंक रिडेम्पशन. शॉशैंक रिडेम्पशन, यस यस. आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी वो माइट हैव hold करते सीन रहता इट. है, हाँ, छोटा. वंडरफुल मूवी, बट मैं वो रिकमेंड करूँगा. कोई तमिल मूवी, एनी तमिल मूवी? तमिल मूवी तो बहुत सारा है, बट मैं रिकमेंड करूँगा लव टुडे. लव टुडे. टुडे. ओके. अरे कौन सा एक हिंदी मूवी आया था शाहरुख खान का, कुकी 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 क्या था रे वो? कुकी शाहरुख खान का मूवी. डंकी. सॉरी डंकी. शाहरुख खान फैंस, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. डंकी था ना. डंकी. आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा अगली लगता है बोलने के लिए, लाइक डंकी. नहीं, वो एक्चुअली ट्रू स्टोरी पे वो मूवी है. ओह शिट, माय अपॉलॉजी. सो बेसिकली जिसको लीगली वीज़ा नहीं मिलता है, ठीक है, यूरोप कंट्रीज के लिए, ओके, तो वो लोग डोंकी रूट प्रेफर करते हैं. डोंकी रूट इज इलीगल रूट टू इंग्लैंड. ओके. सो डोंकी को ये लोग डंकी प्रोनाउंस करते हैं. ओके, So that's what donkey. okay, cool. Now I know donkey can also be called as donkey. Okay, next question. Okay, दूसरा question, you know, which I found really funny. ये तो बहुत मैं सोचा कि यार ऐसे भी चीज लोग पूछते. What time is it? What time is it? Okay. So guys, you know, I'm positive everyone has a phone, something or the other with you. So it's on your home screen. What time is it? It's 10:24 in India. Okay, so it's 10:24 in India. Okay, for people जो outside India रहते हैं, so in New York is 12:54, in Los Angeles is 9:54, in London it's around 4:54, in Bangkok is 11:54, in Australia is 2:54. ये 2:54 का ट्रेंड चालू है क्या? Okay, in Dubai is 8:54. Yeah, so these are the time zones. So if you ask me, अगर तुम गूगल में ये सर्च कर रहे हो, this means it's about time that you should get a watch. Would you agree? Yeah. Okay, so that's what I feel when it comes to asking watch. But you know, I'm just wondering, so in your cell phones, just in case, you know, in your cell phones, agar samjho, if you're using an app, I think on the corner of your screen, either this side or the other side, you can see the time. If you're using a Windows, at the bottom of your screen, you should typically have the time. Correct. अगर if you are using a Mac, तो Mac में ऊपर मेन्यू बार में आपको टाइम दिखता है. So मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये लोग जो टाइम पूछ रहे. Okay, I don't understand. But what do you think? कौन है ये लोग? क्योंकि मैं भी सरप्राइज्ड हूँ why this particular question is most searched question in Google. Okay, What and time is it's it? 11 lakh. 11 lakh people have searched this question in Google. कौन है मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि वो सर्च करने के लिए भी वो बंदा फ़ोन यूज़ किया रहेगा. Yes. या लैपटॉप यूज़ किया रहेगा. yes. और ऑब्वियसली नीचे टाइम भी दिखा रहेगा उसको. तो ये बंदा, ये जितने भी लोग हैं, एक क्यों इन लोग ने डाला, मुझे भी God knows, man. God knows. So we have no idea. मेरे को तो पता नहीं है. ये वो डायलॉग है ना, कौन है लोग, कौन है कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे भी नहीं मालूम. So yeah, and just in case if you were wondering the question जो हम लोग पूछ रहे थे,
What to watch, that is searched around 12 lakh times. Okay, 1.2 million. And what time is it? It's 1.1 million. Let's actually go to next question. दूसरा अभी next question क्या है? Number 3. Number 3 वाला जो question है मेरे को तो बहुत funny लगा. Okay, what is my IP address? Okay, and according to Google Trends, okay, now this is when you fiddle around and do shit. Okay, 754,000. 754,000 times people have searched this specific question. So let's answer this question. So Sandy, you answer this question. How to check? First of all, what is this IP यार? है क्या? IP तो ये वो एड्रेस है जहाँ से हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट. Okay. That's what I believe. जहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं. So if I'm accessing from my home or from my Wi-Fi, so that is my IP address. So Okay. that is a tracking. Basically ये कहाँ से एक्सेस कर रहा है ये बंदा IP एड्रेस. Okay. So basic अभी ये क्राइम भी जिधर भी होता है, क्राइम होता है, वहाँ पे पुलिस क्या करता है, कुछ क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तो पहला IP एड्रेस ही पकड़ता है. Okay, so typically ये तुम्हारे घर के एड्रेस जैसा है. करेक्ट. So it's like a it's an internet's home address. इंटरनेट होम एड्रेस. Okay. So I think it's like a ये कोई सीक्रेट कोड है शायद से जो लोगों को बताता है तुम्हें कैसा फाइंड करना है, या तो मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ उसको कैसा फाइंड करना है शायद से. आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट. बट एनीवे, सो IP एड्रेसेस 4 नंबर से सेपरेट किया हुआ जाता है. आप देखोगे तो यू विल हैव अ कपल ऑफ नंबर्स थोड़े पहले, फिर फुल स्टॉप रहता है, then a couple of numbers, then full stop. So it's typically a sequence of 4 numbers, and each numbers before the full stop can range between 0, मतलब 0 से start हो सकता है और 255 तक जाता है. Okay, ये values के अंदर तुम्हारा IP address determine होता है. I want to see a future जहाँ पे you would go to Flipkart or Amazon, and rather than putting your entire address, they would ask you for your IP address. And you put your IP address. But, can we help people how to find it? Okay, there are 2 ways to find it. Do you know how to find IP address? No. Okay. So IP address can be found in 2 methods. दो तरीके से find कर सकते हैं. Number 1, if you're using Windows, go to command prompt. Okay, Windows, open up command prompt. And after opening command prompt, put ipconfig. If you put this term and if you press enter, IPv4 करके एक section आएगा. That's your IP address. If you don't understand command prompt, go to this website called speedtest.net. The moment you try to check your speed, it displays the name of your ISP provider, which is your internet service provider. और उसके ठीक नीचे you will have your IP address. Very simple. I don't know why people. I think you should put this solution in yes, your comment. Definitely. So on the show description, I'll have this under the comments so that you guys can see it. Next question. Okay, 754,000. So 7.0. Oh, मच्छर काट रहा है. कौन है? अरे यार. Okay. Next question. Okay, how many weeks are there in a year? Okay, and according to Google Trends, okay, it was 577,000 times people search for this. Unbelievable. So you answer, Baba. How many weeks? How many weeks in a year? Okay, so I probably think that mostly school students or college students, they might be searching this in Google just to solve their logic for or assignments mathematics or something like that. Yeah. Okay. Maybe most of them would be from school or students, but still I would say, यार, how many days in a year हमको याद रहता है? 365 or 366. Correct. Yes. Then why can't weeks? तुम याद करके रख सकते हो. Yes. तो गूगल करने की ज़रूरत नहीं है. Yes.
That's what I think school students or college students mostly would be searching this. I personally have a feeling this could be those individuals who get paid, जिसको हफ्ते हफ्ते का सैलरी हाँ, मिलता है. वो भी है. मे बी वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई मुझे आईफोन लेना है तो कितने हफ्ते काम करने पड़ेंगे, कितना बचाना पड़ेगा, मे बी दोस्त. बट वो आंसर, अगर इसका आंसर देना है तो देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर. 52 weeks. ओके, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू सर्च इट. ओके, इट्स गोना बी 52 वीक्स. अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है. सो 52 वीक्स प्लस 1 डे if it's a leap year. So this year was a leap year. There were 29 days in Feb. Right? So 52 weeks. Very easy. If you can't remember it, अगर तुम remember नहीं कर सकते, I would recommend you tattoo it in your arm. Okay, somewhere close. So that. Okay, next question. How many milliliters do you have in a cup? Okay. The American version suggests how many ounces in a cup. अपन इंडियन वर्जन में आंसर करेंगे इसको. ओके, एंड बिलीव इट और नॉट, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है 5,71,000 टाइम्स गूगल किया जा रहा है. सो व्हाट द हेल आर दे ट्राइंग टू मेजर टू? लाइक ये आउंस वाला क्या सीन है? मतलब So I think people who drink more water, they must be calculating this. Yeah, people do have, right? In a day I have to drink 2 liters, or in a day I have to drink 1.5 but liters. you know, what about cups? Like, you know, so maybe 1 liter. So they don't have a bottle, or they are in an office, so they have to drink in a cup. Okay. In their particular office. Do you think it might be for cooking? Probably Cooking makes more yes, sense. yes, Cooking yeah. makes more sense. I don't know. I mean, I would. If I am at office, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो कप लेके घूमूंगा. आज 2 कप मारा, 3 कप मारा. Like, you know, I don't know. It will be a little challenging. But in case, if you want to know how many ounces in a cup, according to me, it depends. You can have like a big cup, small cup, medium cup. It could be anything, right? So, कप की साइज के ऊपर डिपेंड करता है. इंडियन मेंटालिटी और इंडियन यूटेंसिल्स के हिसाब से बोलूँ, सो आई थिंक हमारा एक कप बनता है 200 ml. 200 milliliters, okay, is 1 cup of whatever. So now if you have a big cup, small cup, whatever, अब 200 ml का कोई भी जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, 200 ml के पैक में आता है, उसमें भर के नाप लेना. वेरी सिंपल, राइट? क्यों इतना स्ट्रेस, क्यों गूगल को परेशान कर रहे हो? कितना आउंस? एंड ऑल्सो ये वो लोग भी रह सकते हैं जो पार्टी ऑर्गेनाइजर्स है. हाँ, ओके, वो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो बजट के अंदर उनको वो कोल्ड ड्रिंक्स उनको लेके आना है. हाँ, तो इतने कप्स में मुझे कितना मिलीलीटर जाएगा, तो इतना मिलीलीटर के लिए मुझे कितना बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स मुझे लेके आना है. हाँ, मे बी या यू नो, यू आर राइट. अभी देखो, मैं माजा का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ओके, बट यू नो, आई हैव अ बॉटल ऑफ माजा हियर. आई रियलाइज मैन्युफैक्चरिंग में दे हैव इंक्लूडेड समथिंग एल्स रिसेंटली. ओके, वो ना एक्चुअली प्राइस, अरे यार ऐसा टाइम आ गया, प्राइस ही नहीं दिख रही. इरेज कर दिया क्या तूने? अच्छा, मैंने पी की इरेज कर दिया रहेगा. Okay, now manufacturers are supposed to actually tell you what is the costing per ml or something of that sort. I remember recently there were some changes which had happened. So it gives you that specific price. Okay, which apparently it's not being printed. So maybe it's like a free sample which I have drunk. So whatever. Maybe I can look at a manufacturer of a different bottle. Okay, so do you see that 750? This is 750 ml. It shows 0.24 per ml. Per ml. So maybe people who are in the manufacturing business, maybe वो लोग काउंटिंग के लिए कर रहे हैं. So this is just an hypothesis. I actually don't give a damn. मेरे को तो फर्क नहीं गिर रहा है भाई कितना. आपको जवाब मिल गया ना? 200 ml. 1 cup, 200 ml. Next, Stanley. When is Easter? March 31st. भाई ये क्या? ये क्यों सर्च किया है लोग? Okay, would you actually search when is Christmas? Right? हाँ. और क्या बोल? नहीं, मैं बोल रहा था कि now Christian people, they know when is Easter. Yeah. Or maybe people who want to, you know, plan their long weekends or something like that. वो तो वैसे भी संडे को आ रहा है, फिर भी क्यों सर्च कर रहे हैं? फिर भी क्यों सर्च कर रहे हैं? हाँ? वैसे भी ईस्टर संडे को ही है. संडे को ही है. Okay, what plan of action?
Are you searching this? Comp off मिलेगा इसके हिसाब से search कर रहे हो? संडे है, क्यों हाँ। कॉम्प ऑफ मिलेगा? Comp off भी नहीं आ रहा है तो मतलब I don't know like you know क्योंकि does the date of Easter changes every year? Yes, or maybe that's why even Christian people they do calculate that Lent period and all. When is the Lent coming? When Easter is coming? Okay. So every year it keeps changing. Okay. So I was unaware of this fact. मुझे लगा हमेशा 31st को होता है or I was assuming it's towards the end of the month. No. तो Every year it keeps changing. Good to know information. Okay, next अपन देखते हैं कि क्या है. How many minutes are we? 21 minutes in the event. Okay, let's go. Question number 7. Who called me from this phone number? कौन मुझे phone किया ये number से? So typically guys, you know, is this really a question to ask Google? Yeah. Okay, so typically most phones have caller ID. Okay. सब phones में caller ID है. तो name नहीं, कम से कम location तो दिखा देता कहाँ से आ रहा है. Okay. अभी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बहुत स्मार्ट हो गए. ओके, जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको रादर दैन गिविंग लैंडलाइन नंबर्स, क्योंकि लैंडलाइन नंबर्स ब्लॉक किया जाता था, दे स्टार्टेड गिविंग सेल फोन नंबर्स सिमिलर टू लैंडलाइन. ओके, सो नाउ दे आर कॉलिंग फ्रॉम दैट. Okay, and what they have also done is that they use switchers as well nowadays. Multiple numbers से हमें call आ सकता है. Okay, and some of these telecom providers are also doing this VoIP thing. Okay, it's internet-based phone calling which they are doing. So there are two possibilities of people who are searching for this. Okay, one, you are a fraud. Second, okay, you got a missed call. Okay, but it's not available on doesn't have a caller ID. Yeah. तो मैं तो recommend करूँगा to install this app called as Truecaller. And in Truecaller there is something called as reverse lookup. Yeah. Okay, it's a fancy word. When I used to use, मैं जब LexisNexis use करता था, जब banks के लिए काम करता था, तो उनका पूरा कस्टमर बैकग्राउंड हिस्ट्री सब कुछ मिलता था. आई डोंट थिंक ट्रू कॉलर में वो पोटेंशियल है कि भाई एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ निकाल के देने का. सो दिस इज़ जस्ट मे बी बोलते हैं ना एक हाइप्ड अप वर्ड ट्रू कॉलर ने यूज़ किया है, बट काम चलता है. आई थिंक इट गिव्स यू द नेम. अगर वो बंदे ने या बंदी ने एंड अदर्स उसने एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस कुछ भी ट्रू कॉलर में दिया है, यू वुड बी एबल टू सी इट. ओके. हैव यू एवर एनकाउंटर्ड दिस? कभी तुझे मिस कॉल आया है और तूने सर्च किया है ऐसा? हाँ, मैंने किया. क्यों? टू नो हु इज़ कॉलिंग दैट. क्यों? तूने क्या कांड किया था? मैंने कुछ कॉल नहीं किया. एक अननोन नंबर से कॉल आता है. नहीं, मैं पूछ रहा था क्या कांड किया था. कांड कुछ नहीं किया था. एक अननोन नंबर से कॉल आता है. हाँ, तो वैसा कांड कुछ नहीं, जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि अभी पता है ना, क्योंकि बहुत मच्छर बहुत है यार इधर. आई एम ईटिंग मच्छर. क्योंकि कॉल करके यू नो देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड स्कैम्स हैपनिंग. ओके, so better to avoid those numbers and just to search in Truecaller who is calling that, and then we'll call back. Okay, I recommend another solution also, Stanley, which you can also try to identify कि ये एक मशीन कॉल कर रहा है कि एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग. मैं तुरंत रेकमेंड करता हूँ कि तुम रिप्लाई करो उनको सेइंग प्लीज़ टेक्स्ट और व्हाट्सएप नहीं करके. अगर इंसान है तो वो तुम्हें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करेगा. अगर मशीन है तो मैसेज आइदर डिलीवर नहीं होएगा, या डिलीवर होएगा तो भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा. सो बेस्ड ऑन यू कैन जज. एंड वंस यू आइडेंटिफाई सच नंबर्स, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे ब्लॉक करना चाहिए. अगर काम का नहीं है, इफ इट्स अ स्पैम or it's some marketing team calling you, just block it. Yeah, why waste energy, resources? Next question. Okay, when is Father's Day in 2024? When is Father's Day? बोल. अब इसका क्या सीन है ना, फादर्स डे आता है एवरी थर्ड संडे ऑफ जून. Okay. ठीक है, एवरी थर्ड संडे ऑफ जून. सो व्हाट हैपेंस इज दिस डेट कीप्स ऑन चेंजिंग एनुअली. Oh, I had no idea, dude. ये साल कभी है? ये साल का भी. ये साल कभी है? कभी है अभी, वो मेरे को भी गूगल में सर्च अरे करना अरे पड़ेगा. वाह शो कर रहे हैं. So it's Okay. Sunday 16 June 2024. June 2024. So this Come also on. keeps changing annually. क्या इज्जत खराब करती है. यहाँ पे सोल्यूशन देने के लिए बैठे थे, बोलते हमें भी गूगल करना पड़ेगा. Okay, whatever.
Okay. Okay, next question is how to would you beat that the Father's Day का जो question था 3,53,000 times. The next question which I'm asking you और मैं बोलने वाला हूँ that is 3,40,000 search. Okay, and this is very interesting. How to tie a tie. How to tie A tie. Okay, तो मैं बोला कि भाई अभी तो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाई देता हूँ कि कैसा टाई करते हैं. Okay, so let's actually do this. Chrome tab, come on. How to tie a tie. Okay, I'm gonna be sharing this. Also share audio. Yes, let's share. So I'm positive you guys would be able to see this. Okay, हम कोने में आ गए. Okay, and I'm gonna play this video on full screen so that you guys can see it. Okay, are you with me? Let's watch this. I'm going to show you one of the most popular ways to tie a tie, using the Windsor knot, also known as a double Windsor. School में मैं ये पेन किया था ऐसे. Start with your collar up and the tie around your neck. If you're right-handed, hold the wide end in your right hand and the narrow end in your left hand. Now it's important to remember that the longer you make the wide end, the lower the tie will hang when you're finished. Basically, you want to line up your tie like this. If you remember this, you'll save yourself a lot of time later on. Now, बहुत slow है रे cross the बंदा. tip over, wide end over the top. जल्दी करेंगे. इसको देख के ना मुझे गिलबर्ट की याद आ रही है. गिलबर्ट. That's about 4 inches क्योंकि or 10 इसके centimeters. प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब था वो तो डेली टाइप इन के जाता Take था. the wide end, thread it through the back of this opening from behind. भगा. Like this. Now take the Fast wide man. left hand, wrap it all the way around Come the to the wrist, freaking point. switch hands. Notice here how the back of the tie is facing outward. Taking the wide end now in your right hand, thread it through the front of this opening. Who is he Now, waiting thread it for, down dude? this time. Thread it लोग all the pause way करके देख सकते हैं. Right, hardest part's now done. The rest is easy. What you can see here is the inside of your knot. Should look a bit like a triangle. Put your left index finger on the knot like this and keep it there. With your other I hand, wish we wrap could it increase around the knot speed right even to more, left. but it does not have that option. But it's okay, it's a tutorial video, so With your right hand, वो slow ही बनाते हैं वो लोग. from the back. I know an easy method than this, and I'm just saying. Okay, this guy is taking too much Your time. index finger has created a little tunnel. What about people who You can have do that, slide the a tie belly down to the top. like myself? Put it down. Okay, this the big knot Press it which down, you're just doing, like that. Alternate ये your काम thumb नहीं and करेगा shoulder. भाई हम लोग के Wrap लिए. the knot up, shake it as We you need go. longer Just like ties, it. ताकि Sharp, match smooth हुए, triangular knot. right? Pull your collar down. Oh, perfect type, bro. Windsor knot. Perfect, man. Thank you, Perfect. Walter. I hope you found this helpful. Yeah, definitely. I'm gonna give you a thumbs down, dude. Fine. All right. So let's go back to our live stream again. So guys, you noticed, right? I wish मैं दिखाऊं आप लोग को. एकदम simple है. स्कूल में ऐसा बस इतना ही है. Okay, so I've tried finding you information. कभी बोल. अपने पॉडकास्ट पे एक फीडबैक आया है. हाँ. बानू ने दिया है. हाँ. वॉइस टू लो, वर्क ऑन दिस. अभी इसमें क्या करे? वॉइस. हाँ, अरे तू लाइव स्ट्रीम देख रहा है ना इसके वजह से. Okay, we will do something about this, Banu. Don't worry. Your feedback is utmost accepted. 8,000 रुपये आएगा तो I'll buy a new mic. So then the audio quality would be high. Okay, if you're interested in investing, Bhanushali, स्पॉन्सर करना please चाहेगा. please sponsor. What is the name? MP Supermarket. MMP सुपरमार्केट. MMP? अरे ब्रांडिंग हो रहा है उसका. अरे MP है. मोमैया. मुंबई सुपरमार्केट है. अरे मोमैया Supermarket. MP Supermarket. मोमैया Supermarket by Bhanushali. Please check it out, guys. If you are in Virar, you have to definitely go to this supermarket. Kick-ass stuff. Okay, Banu, ये बहाना में 20,000 रुपया दे देना. एड रेवेन्यू. Ad revenue 20,000. Okay, shopping बढ़ा दिया तेरा. Next question. Okay, how to boil an egg? भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये बहुत कढ़ाई पे डिपेंड करता है. Okay, if you have like a thick stainless steel thing, पानी बॉयल होने में टाइम लगता है. प्रोसेस टेक्स लॉन्ग. सो द होल वेसल मेक्स अ डिफरेंस. आई हैव फाउंड अ वीडियो. सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च देर आर डिफरेंट स्टेजेस. 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 से 12, 10 से 14 ऐसा करके स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. तो आई विल प्ले द वीडियो प्ले करता हूँ तो आप लोगों को सुनाई आपको समझ में आएगा कैसा बॉयल करते हैं. ओके, सो लेट्स हैव दैट ऑन आवर स्क्रीन. So I hope you guys can see this. Okay, and I'm going to be doing full screen करके मैं आपको दिखाऊंगा.
ओके तो सबसे पहला कढ़ाई लेना है, पानी बॉईल करना है, दिख रहा है सन्नी? अभी ये तो भाई एल्यूमिनियम लग रहा है कि स्टेनलेस स्टील है? स्टेनलेस स्टील है शायद। एल्यूमिनियम वाइट कलर का रहेगा ना, ये स्टेनलेस स्टील है यार। अगर पानी के ऊपर ऐसे बबल्स दिख रहे हैं इसका मतलब पानी बॉईल हो चुका है। ओके उसके बाद देखते क्या होता है। That our water is boiling, we can add our eggs. Turn the heat to low while you add the eggs, as this will stop them from bouncing around and cracking. But once you've placed them all in, you can turn the heat back up. I love my stainless steel skimmer as it makes adding and brown egg removing बहुत the eggs महंगा from the मिलता है यहाँ pot पे। super easy. And I'll link this in the आप description वाइट एग box भी यूज below. कर सकते हो। As soon as the eggs have been added to the water, ये I अच्छा start a आइडिया timer. है, टाइमर रखना। And today, मैंने because ना I'm एक showing you चीज a नोटिस variety किया of है, eggs, बहुत लोग क्या I'll करते remove them हैं, at अभी ये 6, बॉईल 8, पानी बॉईल होने के 10, बाद उसमें 12, एग्स डाला and बराबर। 14 हाँ। minutes, बट मैंने बहुत which लोगों को देखा spans है a pretty पहले wide variety एग्स डाल of देते, पानी soft डाल देते और boiled फिर hard गैस boiled ऑन करके eggs. फिर boil हाँ करते। हाँ ऐसे लोग करते हैं बट सही नहीं। सही नहीं। नहीं अगर तुम्हें ये इक्वेशन के हिसाब से चलना है तो नहीं, पानी बॉईल होने रखना है, उसके बाद 5 मिनट 6 मिनट वैसा है। करेक्ट करेक्ट। Now, not to get the eggs all mixed up, I'm writing their cook time on the shell today after they've had a minute to cool अच्छा, down नंबर in दे the दिए। ice water bath. ताकि इसको मालूम पड़े 6 मिनट है 8 मिनट है जो भी है, आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। अगर मैंने सुना है अगर तो 5 मिनट कुक करेगा तो तेरे को गिला गिला मिलता है, अंदर जो योक है वो गीला गीला गिला रहेगा। गिला रहता है, हाँ। तो उसको चम्मच से अपन मिक्स कर सकते हैं। सो अगर ब्रेड है टोस्ट में डुबा के खाना है तो that's the सनी best। साइड अप टाइप। नहीं सनी साइड में तो पकाना है कुछ भी When साले। it comes to peeling the 6 egg मिनट and में देख कैसे removing the दिख रहा है। shell, I always find it's easiest एकदम to हार्ड start at the thick नहीं, ये end तो of the egg. मेल्ट थोड़ा सा There's usually a वाटरी bit of रहेगा। हाँ, air ये आइडिया bubble on अच्छा the है end, हाँ, and भले ये it's पानी easier to वेस्ट get कर रही है under the ना, membrane that मैं तो एक separates बर्तन the में shell लेके वही from the पानी को egg. रीयूज करता हूँ। Running the egg under cold water while you're peeling helps as well. ओके सब निकाली देख, अलग अलग टाइम से रखी है, 6 8 10 12 14 रहेगा शायद से। अंदर तो वाइट, अंदर भी All ब्राउन right, होना let's चाहिए ना। slice 6 open minutes. these eggs and see how they turned out. This first egg is our 6-minute egg, and it should be quite soft Correct. with a liquidy yolk. आई डोंट बिलीव but हर the दो, whites should be मुझे fairly लगता है cooked. 7 मिनट पे होता है। अगर 5 मिनट पे गिल्ला For रहेगा our तो जल्दी पक 8-minute गया। egg, the yolk will still be Now this is soft, 8 but minutes. it's not liquid or jammy anymore. या 8 मिनट्स, ये भी अच्छा है। आई Our लाइक दिस। 10-minute egg is the softest of what I'd consider hard-boiled, and there's just This a is what I smidge of prefer. softness This is left what in you the 10 yolk. minutes. I like the other one. I like the Yeah. 8 नहीं Our नहीं 12-minute egg is a bit seven. firmer with a lighter yolk, and this is the time I cook most frequently when I make hard-boiled eggs. बॉयल तो हो गया, और कितना कुक करेगा इसको? Lastly, उसके बाद फट our जाता है। 14 14-minute egg minutes. is your traditional hard-boiled egg with the यार lightest 14 मिनट्स yolk में जब and रखता हूँ firm ना, white, साला वो but तो it's not फटके आ जाता है यार overcooked मेरे Yes. and there's no इसका कुछ tinge or ब्राउन anything. एग यूज कर रही है ना ये हरामी, समझ रहे हैं? ये ब्राउन एग यूज कर रहा Once you है। get the hang of cooking eggs this So I don't believe her though. So whatever she's saying, I don't believe her. Okay, exact नहीं, but at least तुम्हें रेफरेंस में तो मिल गया। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अंडा बनाते हो, और मेरे को प्रैक्टिस है, मैं अंडा भुर्जी बॉइल्ड एग ये सब बनाता हूँ, और मैं बाहर से भी खाता हूँ। ओके तो माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप पानी को बॉईल करो पहले, उसके बाद बबल्स आने के बबल्स बाद आने के बाद एग एग्स डालो। ओके और प्लीज़ ध्यान देना कि एग के पीछे गू नहीं रहे कुछ लोग मुर्गी का जो गू चुपका साफ करे बिना डाल देते हैं। ओके नहीं, एक नमक भी लोग डालते हैं। हाँ वो भी डाल सकते हैं। हाँ आई हैव ऑल्सो सीन, मेरे को पता नहीं तूने भी नोटिस किया है, कुछ लोग ना अंडे पे खड्डा करते हैं, वो बारीक से खड्डा करते, होल करते वेरी थिन, एंड देन ऑल दे पुट इट, उनको लगता है कि उससे जल्दी कुछ होता है। आई डोंट नो डू, वो ब्रेक नहीं होता है बेसिकली। मे बी सम रिचुअल्स, मे बी सम रिचुअल पूजा पूजा ऐसे करेंगे तो हमारे घर पे लक्ष्मी आएगी, ऐसा कुछ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह इतना ही था, ओह 10 क्वेश्चन हमने आंसर कर 10 दिया। क्वेश्चंस हो गए। अभी ठीक है, अभी ना एक्चुअली नो rather than actually answering questions, because we answered the questions anyway, Yeah. let's, अगर आप लोगों को you want something to be added to, अगर ये गूगल वाले लिस्ट में ऐड करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कमेंट्स में डालो, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, टेल अस what questions you would like to be included in it. Okay. I want to personally add a few questions, and I think you also want to add a few questions. So Stanley तू बता तेरे को कौन से क्वेश्चन ऐड करने? मैं तो बोलूँगा भाई, हाउ टू कुक चिकन डालो।
how to cook chicken. Okay, so Stanley is suggesting कि how to cook chicken trending वाले topic में आना चाहिए. वेजिटेरियन वाले लोग कुछ और डाल दो. हाँ. ये मैं नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए. For vegetarian people, how to cook potato. Yeah. Yeah. How to cook potato. Yeah. 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 चलेगा. अच्छा ठीक है. यही है और कुछ. और मैं क्या सोच रहा था, तब तक तू बता दे, मैं सोचता हूँ. हाँ, मेरा था कि मेरा था what to listen. ओके, मेरा फर्स्ट था कि भाई तुम वॉच का तो बोल रहे हो, कभी कभी अच्छा म्यूजिक रहता है सुनने में. एंड समटाइम्स यू नो दैट 5 मिनट्स 7 मिनट्स और 3 मिनट्स विच एवर वो जो भी ड्यूरेशन है गाने का अच्छा लगता है. सो मैंने रिसेंटली आई come across this song called Mr. Saxo Beat. It's a radio edit version by Alexandra Stan. Okay, apparently it has your name in it. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, थोड़े टाइम के बाद चेक करना, it will come there. Okay, and that's what is. My second thing which I wanted to be included was क्या पी सकते, what to drink. मुझे पता है कि जो दारू वारू पीते हैं उन लोग को अभी एम्पलीफाई होके लगेगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं, बट यू नो दिस इज अ फैमिली फ्रेंडली चैनल. ओके, सो आई एम गोना से what to drink would be a good question. And if you personally ask me that question, I'm gonna say coconut water. Being a Malbari from the south, I feel coconut water is the right thing to And go that's the ahead. best drink in the world. Best drink in the world. You can mix and match with anything as you like. Coconut water is the best. तेरा? One question I have, that is how to grow vegetables at your home. I don't think it is easy. I know it's not easy, but for small houses also, you can put how to grow. क्या मतलब बनाए, क्या उगाएगा तू? कुछ भी यार, प्लांट्स जैसे कि अपना कड़ी पत्ता हो गया, करी लीव्स. हाँ. You can grow. ऐसी तू बाजी वाले को पूछता ना, देखता तोड़ के. नहीं, बट घर पे बना के खाने से समझ समथिंग स्पेशल. मैं भाजी लेने आता हूँ ना, उसको मैं बोलता कड़ी पत्ता थोड़ा डाल दे, तो ऐसी दे देता है. नो डाउट. ठीक है, पैसा देगा तो मिल जाएगा, बट if you grow at your home, if you're growing, then grow something expensive, and you're plucking it and you're cooking it out of it, that is something, a special feel you'll have. जी भाई, मेरा घर पे उगा हुआ करी लीव्स से. अच्छा ठीक है, तेरे को ऐसा उगाना ही देगा, क्या उगाएगा? मैं करी लीव्स मेरे घर पे है, मैं उगाऊंगा करी लीव्स. अभी तो क्यों नहीं किया फिर? मैं किया नहीं, मेरे घर पे उतना जगह नहीं है. अच्छा, स्पेस नहीं है. प्लान करूँ. मैंने उगाया था, कौवे काट के लेके आते थे कौवे. तो I did not have much success with it. तो उसके लिए कौवे काट के जा रहे थे या बाजू वाले चोरी करके जा रहे थे? नहीं, कौवे काट के लेके जा रहे थे. Okay, so I would say if you want to really grow something big, then grow something. नहीं, if you want to grow vegetables, कुछ बड़ा करो. Okay, मेरे हिसाब से cabbage, drumstick tree, cauliflower, sugarcane. Grow sugarcane. But these are all trees, no? You can't grow at your home, bro. I don't know. You need a lawn. You need a farm. नहीं, figure it out, यार. मैं बोला फिगर आउट करो तुम लोग अपने हिसाब से. अगर तुम्हें लगता है कि उतना बड़ा लैंड ऊपर डालना है तो करो. ऑर्गेनिक वेजिटेशन. अगर तुम पतरा लगा सकते हो तुम्हारे बिल्डिंग में पानी बचाने के लिए, ड्रेन वाटर ये वो, तो तुम फार्म लैंड भी बना सकते हो, राइट? और क्या बनाना, वेजिटेबल से फ्रूट्स में आ गया मैं तो. बेल पेपर, यस, टमेटोस, स्ट्रॉबेरीज है, बहुत कुछ है. स्ट्रॉबेरीज हैं, टोमेटोज हैं, पालक बना सकते. पालक बेस्ट थिंग. स्पिनच, Popeye the Sailor Man. Anyway guys, you know, see, मैं समझ सकता हूँ कि मे बी आपको ये एपिसोड मे बी इतना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नहीं लगा रहेगा. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, यू नो, एवरी चैनल हैज़ अ प्रोसेस. सबका ना एक ग्रोथ का एक स्केल रहता है. आज मेरा दोस्त मेरे साथ है तो हम लोग ये एपिसोड कर पा रहे हैं. आई एम वेरी थैंकफुल. ग्रेजुअली आप देखोगे ये चैनल में और एडिशंस. वी आर गोना बी मेकिंग बेटर एंड बेटर कंटेंट. अभी देखो, आई एम नॉट अ यूट्यूबर पर्सनली, नीदर यू आर. हम सब भाई सीखते हैं आराम से, राइट? आई डोंट थिंक कि हम एक साथ सब कुछ अचीव कर सकते. भाई फेम को सब साइड में रखते हैं. द ओनली रीज़न मी एंड स्टैनली एंड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर आवर मेमोरीज. जब बुढ़ा हो जाएंगे, कभी मरने का टाइम आ गया, हाथ पैर नहीं हिल रहेगा, तो एटलीस्ट वी कैन गो थ्रू सम ऑफ द स्टफ विच वी हैव क्रिएटेड. हमारे बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि probably we'll have lot of stories to share with our children. हाँ, क्या क्या कर सकते. तो मैं तुमको रेकमेंड
नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे चैनल को फॉलो करो, ये करो, वो करो. अगर तुम्हें लगता है कि जो हम लोग ने बात किया इट मेक सेंस तो एक लाइक कर और दो. सपोर्ट करना है तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को डाल दो, क्लिक कर दो. ओके. एंड वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग यू मोर स्टफ. अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया है जिसके बारे में हम लोग दोनों हमारा ओपिनियन दे सकते हैं, प्लीज़ शेयर इट विथ अस इन द कमेंट्स. उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा. थैंक यू. मस्त एक ट्रैक बजाता हूँ. लेट मी सी विच ट्रैक शुड आई प्ले. We'll work on the sound very soon. Yes, we will. It's just a matter of acquiring sponsorship from Banu's. Banu, we kindly request you to give us 20,000 so that we can work on getting a new mic for ourselves. Maybe a new camera also. Initially 20,000 से चालू करेंगे, 2 लाख तक रुक जाएंगे, है ना? उसका मार्केटिंग करके मोमैया होलसेल सुपरमार्केट बड़े करना, हाथ उठाना, सपोर्ट. मोमैया, बानू, चीयरिंग प्लीज. Great job with this stream.